Morning all. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Is the audio video clear? Three. Uh, Last one. Somebody else. This is best to see. Hello. I think we had finished with the menstrual cycle and the pre-fertilization events. Okay. So this from here onwards, we'll start with the post-fertilization events. Is the audio video clear, people? Are you able to hear me well? Badhiya, theek hai. Let us begin then. Already we have seen all the events related to events of pre-fertilization, matlab gametogenesis. There we had looked into spermatogenesis, oogenesis. Okay? And then we had looked into the various changes in the uterus, etc. Menstrual cycle. Fine. So pre-fertilization events, khatam. From here onwards, we'll look at the next part of events, matlab fertilization and post-fertilization events. ठीक है? चलो देखते हैं. Now this part is important and interesting. In fact, each and every part of this particular chapter is important. Why? Because initially, there were two chapters in this section. Okay? One was the reproduction in organisms, the other was human reproduction. Okay? But the reproduction in organisms has been removed. So the major emphasis now has fallen on this particular chapter. So iski dominance जो है in the actual examination has increased. मतलब पहले मान लो इसमें से 6 से 7 questions आते थे. Now 8 से 10 questions आ जाते. Got the point. So ସେଇ जो ଜିନିଷଟା ସେ chapter remove ହେଲା तार किछिटा questions ର percentage आधे add ହେଇଗଲା. So now this chapter has become more important. ठीक है? ऐसे भी ये chapter बहुत important है with respect to your career if you want to pursue a medical career. ठीक है? So concentrate on this chapter wherever you find difficult, you don't understand. Ask. ठीक है ना? चलो, let us begin then. Now, fertilization and implantation. Basically, what is fertilization? ठीक है? Now, fertilization simply implies the fusion of the male and the female gametes. This is what you refer to as fertilization. Lekin, in case of higher organisms like human beings, there is another event before fertilization.
we refer to it as insemination. ठीक है, क्या बोला जाता है बच्चा उसे? Insemination. Now, insemination implies the delivery of sperms into the female reproductive tract. Simply कहा बोले vagina. ठीक है? So that is what is insemination, and the no process by which insemination is carried out is known as, say, coitus or sexual intercourse. ठीक है? Insemination, coitus or sexual intercourse. Good morning, good morning. Subbu Nai sir. Lakshmi, I think I had cross-checked that the audio video was clear. अरे मेरी आवाज आ रही है आपको? Is everyone able to hear? Subbuchi? Yes. So Lakshmi, maybe no, the weather is not good. ठीक है? It's raining also. So ସେଇଥିପାଇଁ maybe network issues ଥାଇପାରେ. Okay? So please check. Huh? Fine. Because the hearing ର କିଛି issue ମୋ end ରୁ ଥାନ୍ତା, then everybody would have have the problem. But since you only have the problem, others are fine. So ସେଥିପାଇଁ the reason might be network at your end. Okay? ठीक ଅଛି. How? So basically insemination, coitus, sexual intercourse, and someone replied correctly also, copulation. ठीक है? Fine. But copulation basically is not a term no commonly used with human beings. Copulation term is more common with lower organisms. How? So insemination hella. Insemination the sperms are transported into the vagina or delivered into the vagina, and then with the in the mechanism is referred to as coitus or intercourse or even copulation. ठीक है? So age insert is delivery. Right? After this, again, there is it's not so simple. Means immediately once the delivery is done, insemination is done, fertilization age empty nine. It is what a both interesting insights from. Basically, when the insemination is carried out, almost more than 1,000,000 sperms are delivered. More than 1,000,000 sperms. But ultimately, in general, only one of the sperms is capable of fertilization. So it the sperm has to travel from the vagina into the fallopian tube, that is the ampullary isthmus junction, जो जगह की fertilization टी होबो. So it's not a small distance. Fine. So it has to travel. The traveling bhitere there are various kinds of changes which will occur. Fine. There will be various kinds of difficulties or resistances, anomalies even. So sorry, sabu jinse ଗୁଡ଼ିକ will have to understand. So one by one we'll see. Insemination, ବୁଝିଲ, coitus ବୁଝିଲ, ଠିକ ଅଛି. Okay. Now, what do you see here?
during copulation, semen is released by the penis into the vagina. It is called insemination. Now, a term T, a particular chapter achi, that is human reproductive health. ठीक है. So SETI a insemination को यदि हमें देखिए, basically insemination can be of two types. Insemination can be of two types. One is natural, the other is artificial. ठीक है जी. Natural insemination, artificial insemination, also referred to as AI. So, my techniques would be body as a part of arts. That is, yes, assorted reproductive technologies, or in that part, AI is also one. Okay. Now, eticonabur, for example, where the the male has certain problem with the functioning of the erectile tissue. And erectile dysfunction, for example. So there, coitus is not possible. Why? Because the sperm delivery is done somewhere from where the chances of the sperms traveling to the ampullary isthmus junction is very, very less. So कौन करा जी वो? So by artificial methods, the sperms will be taken up by using a micropipette or any other delivery gadget and inserted into somewhere in the vaginal section or even in the cervical section so that it's easier for it to travel. सही process को artificial insemination कहा जाता है. Now this is a practice done in case of human being also. It is a practice done in case of cows, buffaloes. सेमानों का fertilization करा जाता है. ठीक है जी. There also AI is used. Which बात So natural insemination, artificial insemination, I think the concept must be clear with you now. Okay? How? Bhujpalla, semen is released by the penis into the vagina. Process is called insemination. Simply, delivery of sperms into the female reproductive tract is referred to as insemination. Fine. I hope everything is clear for you people now. अरे बुझलो तो समझ में आया? चलो आगे बढ़ते. Now, yes. Okay. Now, fertilization, once the insemination is carried out, for insemination hala, what is the tract here, CC? It starts with the sperms. It starts with the sperms. Then sperms enter the vagina. Once the coitus has happened, insemination hai gala. Cervical canal. Then they enter the uterus. And finally the isthmus. Isthmus of ampulla. Okay. Isthmus of ampulla. A region is the site of the fertilization. ठीक है? So isthmus of ampulla, the site here, that is the junction between the ampulla and isthmus. Aqua में कहले ampullary isthmus junction. This is known as ampullary isthmus junction. ठीक है? तो ये part of regular ampullary isthmus. Same way, the ovum also passively is transported to this region. Kai ovum is not released at that site.
ovum is released near the ovary. Ovary ru, look at this. This is the ovary section. A to release the corner. The ovum. A to release the ovum. Okay. Then the ovum propagates. 80 the fimbri section is there. Chill. Give me second. Nine, chill. Okay. Ampulla. Now, ovum enters into this ampulla by the help of the fimbri section. Then it propagates. Okay. Propagate kola. 8 is a ponchla. This is basically the ampullary isthmus junction. Fine. Same way, the sperms deposited at the vaginal section, they also migrate. They also migrate. Vagina, uterus, then the uterine cavity, and into this oviduct. Mujhela, oviduct. So oviduct tray, this part is the isthmus part, and this part is the ampullary part. So the junction or the point where they meet is somewhere here. That is the ampullary isthmus junction. Got it? So the ovum, ovary, fimbri, infundibulum, ampulla, finally the ampullary isthmus junction. Okay? Acha. This kind of mechanism which you see where the ovum, okay, and the sperm are present, a prakar reproductive mechanism taku ame oogamous koithau. Can you tell me what is oogamous, people? oogamous ti kaun ho? Yes, batao bachcha, jaldi batao. Come on. Hey, Kire, Mona Lisa, क्या बोल रही हो? Oogamous is not formation of ovum. Oogenesis is formation of ovum. Yes. Okay. See, in types of reproduction, यदि हमें reproductive mechanisms को classify करिबा on the basis of the reproductive structures or gametes. Gametes is sabre larger non-motile gamete is fused by smaller motile gamete. Shabash! Shruti, awesome. Very nice. Okay. So basically, concept is that when you will find various kinds of classifications that हमें करिबा, तो से classification रे एट ध्यान दिया मोइटी का box बनेगी. I'm drawing it here. Try and understand. The amo case re hame 3 types or 3 ways रे classify करी पारे. ठीक है? One is isogamous. बुझी पारुछो रे? Isogamous. The other is anisogamous and oogamous. Total ame ei tinoti prakar mechanisms of reproduction dekhi pariba on the basis of the shape or form of gametes. Shape or form of gametes. बुझलो? तो এটা জানি রাখো. What do you mean by this? Isogamous মানে ହେଲା যদি male gamete ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ବୁଝିବ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉ ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ପଚାରିବ. Remember,
जहां भी आपको मुश्किलात आती है आप पूछिए, ठीक है। जो चीज मैं बता रहा हूं उसे याद रखना, नोट इट, ठीक है। आइसोगैमस का अर्थ होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर ऑफ द सेम फॉर्म और शेप। इज दैट क्लियर? आइसोगैमस का अर्थ है, आइसो माने सिमिलर, गैमस implies gametes. So if they are of the same shape or form, then we refer to them as isogamous. Is that clear? Motile ho, motile, no, non-motile ho, doesn't matter. लेकिन लेकिन शेप या फॉर्म सेम होनी चाहिए, शेप और फॉर्म सेम होनी चाहिए, ठीक है। देन यू कॉल देम आइसोगैमस। आप ये चीजें ना 11th में पढ़े होंगे, 12th में भी वो जो चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है सेलिंग वहां था, लेकिन सिंस द चैप्टर इज रिमूव्ड तो यहाँ पे इसे बस जान लो, ठीक है। क्लमाइडोमोनस, डायटम्स, वहां पे आपने प्लांट्स के केस में आइसोगैमस वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है, एल्गल फॉर्म में। फिर आया एनाइसोगैमस, इसमें क्या है? अनइक्वल। एनाइसोगैमस का अर्थ होता है अनइक्वल, मतलब मेल and female gametes are different in their form, shape or appearance, ठीक है। that is referred to as anisogamous. फिर आता है oogamous. oogamous रा कॉन्टेक्स्ट है ला, ध्यान रखो, जेहेतु आमोरा oogamous भी and anisogamous मध्य। in case of humans we have both oogamous as well as anisogamous. क्यों? अरे मेल और फीमेल गैमेट्स जो है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स दोनों अलग फॉर्म में है। मेल गैमेट दैट इज स्पर्म दिखने में अलग है, ओवम दिखने में अलग है, तो एनाइसोगैमस तो हो ही गया। लेकिन हम उसे एनाइसोगैमस भी बोल सकते हैं, ऊगैमस भी बोल सकते हैं। कैसे? देखो, ऊगैमस का अर्थ होता है मेल स्मॉल एंड मोटाइल, फीमेल large and non-motile. Male small and motile, female large and non-motile, ठीक है। उसमें होता क्या है भाई? Male since being small and motile would travel to that of the female gamete, ठीक है। Whereas female gamete has a large structure with large volume of cytoplasm, और ऊप्लाज्म बोलते हैं यहाँ पे, साइटोप्लाज्म ना बोल के हम लोग उसे ऊप्लाज्म बोलते हैं। ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऊप्लाज्म बोला जाता है इसे, ठीक है। लार्ज और ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऊप्लाज्म प्लस नॉन मोटाइल है। क्यों? द फीमेल ओवम शैल स्टे वेयर इट इज, ठीक है, and the male gamete has to reach to the female. That is why you call it oogamous. Now यहाँ पे वही चीज, now why I told you all this, because यहाँ पे आपको एक चीज दिखानी है। हमने यहाँ बोला that the female is, here the female gamete is non-motile large and stays at its place, okay, but here you can observe that the ovum from the ovary has traveled to the ampullary isthmus junction. अब इतनी दूर ट्रैवल किया है, तब ये फीमेल गैमेट तो ट्रैवल कर रहा है,
तो इसे oogamous कैसे बोले भाई? चिन्मय दास, ओके बेटा चिन्मय, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? When spermatogenesis is completed, how sperm transform into ovum? Hey Mahatma, sperm is male gamete, ovum is female gamete, ठीक है? स्पर्म कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ओवम में? है कौन कौज रे, तू सुबह से उठ के मुंह हाथ धोया कि नहीं धोया है? अभी भी नींद में है? अरे जागो ग्राहक जागो, क्या पूछ रहे? When spermatogenesis is completed, how sperm transform into ovum? How is that possible? Sperm transforming into ovum? है क्या पूछता है रे? I understand आज weather मस्त है, there's outside it's not sunny and slight drizzle is there, है तो आप लोग का नींद भी मस्त है, ठीक है? half of the people must not have woken up, ये भी नींद तो छाड़ी नहीं। हाँ तो एक काम करो, मुंह हाथ धो अच्छे से, पानी वानी पियो, चाय वाय पियो and then become fresh and फिर पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है? Why? Because see, yesterday the CHSE 12th results were declared. Thankfully to God, all the institutions have done very well in the exam. इस बार pass percentage of students has also climbed up. ठीक है, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा किया हुआ है. The panic which was said that the CHSE format would be transformed into the CBSE format, NCRT के base पे question pattern would be CBSE. They have outshined it, yes. So बच्चों ने बहुत अच्छे तरह से adapt किया है. The percentage of questions and the percentage of marks is very good. 90% के above बहुत बच्चे हैं, ठीक है? So point here is कि adaptability अच्छी होनी चाहिए. कोई भी चीज से आप लोग पैनिक मत हो. Similarly, this year's NEET exam के questions बहुत difficult थे. People, the students have not performed very well. But my point is that I say the students have performed well. Why? Because the trend चल रहा था for the last 6-7 years that the question paper would be like a mediocre, paper, and if students will score 670, 680, 700 plus scores. ठीक है? That trend has been broken. तो अब बच्चे को पढ़ना पड़ेगा. Now, those people who actually study, who understand the concepts pretty well, in-depth study इसको आप बोलते हैं, practicing of questions, concepts, understanding, in-depth understanding, those people shall survive and perform well. ठीक है? So I see this year's score, like those students who have scored 500, 510 even, that score is at par with 600 plus. That score is at par with 600 plus. That's my बात. So 510 score करिए that person would have studied a lot. That's why 520, 530 score cut off this year is actually good. Because people, students would have started actually to consider this examination to be a very easy child's play kind of thing. हाँ ऐसे पढ़ लेंगे वैसे पढ़ लेंगे, ठीक है? Those kind of things would started. Just even I have seen people ratifying things, mugging things up. घुसू तिले इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ABCD ने C ऑप्शन, ठीक है? ऐसा करके रट्टा मार दे, अंडरस्टैंडिंग नॉथिला. But here I would suggest from this year onwards the concepts have changed. और रट्टा मारने से नहीं होगा. You will have to read, understand and solve. ठीक है? तो बच्चा लोग
ये आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एंड दिस अपॉर्चुनिटी शुड बी टेकन अप विद बोथ हैंड्स। अच्छे से पढ़ो, रेस में आगे निकलो, ठीक है। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। यस, ठीक है। तो ध्यान दो रे बच्चा, स्पर्म्स आफ्टर, यहां पे इस पर्टिकुलर जगह पे, एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, कौन सी इवेंट हो गई? यस, इंसेमिनेशन हो गया। एटी इंसेमिनेशन है ये वाला। अब यहां से ट्रैवलिंग है, ठीक है। सेम वे द ओवम ट्रैवल्स फ्रॉम हियर, ठीक है। नाउ आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, oogamous, मैंने आपको तीन बताया। ये भी बताया कि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स द मैकेनिज्म इज रेफर्ड टू एज oogamous। यस, एंड द क्वेश्चन आई आस्क्ड वाज दैट वी कंसीडर oogamous implies non motile and large। अगर नॉन मोटाइल हम बोल रहे हैं oogamous, तो यहाँ पे द ओवम इज ट्रैवलिंग टू द जंक्शन, मतलब यहां से रिलीज होकर यहां पहुंचा। Now, if the traveling is from here to here, ऐसे यहां तक आया, तो ये फिर नॉन मोटाइल तो नहीं हुआ? हुआ क्या? Then why do you call it oogamous? Yes, कौन बताएगा? जल्दी बताओ। Come on, come on, come on. Yes, be quick. अरे पार्टिसिपेट करो। फटाफट 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 उतर दो। विभूति भूषण बेहरा, what is the question? See, I have repeated the question so many times now. Please pay attention. ठीक है? Okay. The worm released into the tube through ostia, which has been created due to suction. Good. Good. Absolutely. See, the female gamete, that is the ovum, is non-motile. मतलब, it cannot travel on its own. Again, the female gamete or ovum is not capable of movement on its own. ठीक है? Then how does this movement happen? This movement has two mechanisms here. The fimri with the opening that is ostia, ठीक है? They create a suction by beating inwards. They create a suction by beating inwards. Fimri माने भीतर आड़ू beat करेगी. They create a suction. The fimbri's beat inwards and create a suction, resulting in the ovum being drawn inwards. ठीक है? अब भीतर पटे, once they are inside, there are cilia present. There are cilia present. These cilia again beat inwards, ठीक है, in that direction, creating a stream or a yes, current. जो direction रे the ovum will be propagated. So the ovum here is showing passive movement, not active movement. बुझे होची? जेहेतु passive movement देखा होची, so therefore the ovum is non-motile. Hence this is oogamous. अरे बुझिला, is that clear? ठीक है?
Okay, fine. Okay, so fusion of sperms with the ovum is called fertilization. Yes, it occurs in the ampullary region of the fallopian tube or oviduct. Fallopian tube or oviduct. ठीक है जी? And to be precise, this region is not only ampullary region, it is the ampullary isthmus junction. Ampullary isthmus junction. Fine. I hope this is clear. ठीक है? Okay. Good. Now, straight away, let's see how this fertilization and then the implantation, etc., would occur. Takku bujhiya ko hele, we'll have to understand the structure of the ovum, the various developments that will occur there. ये सब जिनसे हमें गोटे गोटे करी बुझिबा, ठीक है? Okay. Now, fertilization happens only if the ovum and sperms are transported simultaneously. First, very, very important, ठीक है, concept here. अच्छा, प्रथम जिनसटा insemination द हेला, fertilization हवा पाएंगी, there are certain things involved in it. ठीक है? Now, एई जगह गोटे बहुत important concept अच्छी, जहाँ को हमें कहूचु, remember this particular thing, fertilizing anti-fertilizing रिएक्शन. क्यों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके दिमाग में भी आना चाहिए क्वेश्चन कि हाउ डज द स्पर्म नो कि आपको जाना किधर है. ठीक है, स्पर्म के पास तो भाई जीपीआरएस नहीं है ना. ठीक है, जो आपने लोकेशन शेयर कर दिया, ठीक है, उसने गूगल मैप पे क्लिक किया एंड उसको फिर जीपीआरएस से डायरेक्शन मिलते गए. हाँ, 200 मीटर में टर्न लेफ्ट, 300 मीटर में टर्न राइट, हाँ, टेक द नेक्स्ट लेफ्ट, टेक द नेक्स्ट राइट. ऐसा तो नहीं होता. अरे होता है क्या? यस सर बोलते. कौन है रे यस सर बोल रहे? ओवम के पास. अरे वाह, शाबाश, सही बोल रहे हो. ओके. Now point is कि यहाँ पे this mechanism of movement is basically how? Yes, chemotropic. Chemotropic. ये मूवमेंट कैसी हो जाएगी बच्चा? केमोट्रॉपिक. बुझला? मतलब because of the chemical signals sent by the ovum, the sperms gather that information or detect the stimulus and provide the response by movement. ठीक है? तो from the source which is emitting that chemical, ठीक है, or the stimulus, the sperms etc. would provide the response in that particular direction. This entire thing, ठीक है, ये जो process है, along with small other events, इस total process को fertilizing anti-fertilizing reaction बोला जाता है. And that is the cause of the movement of the sperms towards the ovum. ठीक है? We'll come to that one by one. ठीक है? बट इसे दिमाग में रखना जरूर. फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट. हाउ? नाउ
यहाँ पे हमने क्या बोला, that fertilization is possible if the egg, that is the ovum, and the sperms are transported simultaneously. क्यों है? Why is that? Because this phenomenon of fertilization also is dependent upon one very important thing, that is viability. ये viability क्या है रे बच्चा, कौन बोलेगा? What is viability? Viability क्या होती है? Yes, viability का अर्थ होता है एक्टिव. ठीक है? The sperms as well as the ovum both have a certain viability period. मतलब after that particular time their capacity to fertilize becomes less. ठीक है? मान लो फर्स्ट 24 आवर्स में चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन सबसे ज्यादा है. देन जैसे 36 आवर्स हुआ और कम गया, 48 आवर्स हुआ और कम गया, बाय द एंड ऑफ 72 आवर्स खत्म हो गया. ठीक है? मतलब नाउ even if the sperms and the ovum meet, they will not be able to fertilize or follow the next set of steps, that is implantation वगैरह नहीं होगा, because viability period is over. Clear? जैसे को किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, आफ्टर दैट दे बिकम इनएक्टिव और इनइफेक्टिव. यस, एब्सोल्युटली. So therefore, please remember this viability period, and उसी वजह से ये simultaneously लिखा गया है. Yes, Manashwini Mishra, welcome. ठीक है? So all copulations do not lead to fertilization and pregnancy. Now this is a very important thing. ये आपके assertion reason में previous years question में आया हुआ है, इस पर ध्यान देना. Assertion कोयला that all copulations do not lead to fertilization and pregnancy. ठीक है? Reason बोला, the sperms and the ovum must be released simultaneously for fertilization. ठीक है? तो assertion is true, reason is true, explanation भी है. ठीक है? Why? Because simultaneously indicates the time period, viability. Fine? How? Okay. A sperm contacts with the zona pellucida. It induces changes in the membrane that blocks the entry of additional sperm. Now, a diagram को ध्यान दियो, you'll try and understand it. Say this is particularly the sperm. Now, sperm raw head region re. At the head section, we have the acrosome. Yes. Now, बच्चा लोग बोलो रे, acrosome in the sperm is the modification of dash. I repeat the question. Acrosome of the sperm is the modification of dash. Yes. Shabash. Answer is Golgi body. Very good. Pache. Lovely. Yes. What does it contain? What does it contain? उसमें होता क्या है? Good. Good. Hyaluronidase enzymes. ठीक है? यहाँ पे एक सिंपल सी चीज आप लोग को बोलना चाहूंगा मैं. ठीक हो ची? What is that? एठी तमे गोटे जिनसे कहबो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मन रहिला. इट इंक्लूड सो मेनी थिंग्स. क्यों? हाइयालुरोनिडेज खाली कहले ठीक हबनी. व्हाई? बिकॉज देयर आर अदर एंजाइम्स आल्सो इन्वॉल्वड. ठीक अछि?
जोना पेलुसिडा पाएंगी, कोरोना रेडियाटा पाएंगी, वाइटलाइन मेम्ब्रेन पाएंगी, अलग अलग एंजाइम्स है, ठीक है। तो सिंपल टोटल कैटेगरी क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, क्लियर, ओके। व्हाई दे आर हाइड्रोलाइटिक इन नेचर, गुड। तो इसका सिंपल अर्थ है, दे आर बेसिकली acidic, they are basically acidic, or the pH is less than 7. ठीक है, one thing, so they get activated in acidic pH. Secondly, they require water medium for their activation or functioning, fine, ये हो गया दूसरा। तीसरा, they perform the action of lysis, माने breakdown by digestion, भांगी दियन। Since they have hydro or water requirement as a medium, they perform lysis, that is breakdown, ठीक है, and they are activated in the pH which is mostly less than 7 or acidic. Therefore, एमानों को collectively hydrolytic कहा जाता है। तो हमें माने यदि सेल पॉडिचर ठीक रहे, if you remember, तो ସେଇଠି Golgi endoplasmic reticulum ସାଙ୍ଗରେ lysosomes ପଡିଥିବ, yes। तो Golgi माने ଯେତେବେଳେ vesicles ତିଆରି କରନ୍ତି, okay, from them you'll observe the formation of lysosomes. Golgi bodies ମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ସାଇଡ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସିସ୍ ଫେସ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସ ଫେସ୍ ଅଛି। ट्रांस फेज बाटे वेसिकल्स गुड़िक बाहर, yes, now those vesicles contain these hydrolytic enzymes and those are only referred to as primary lysosomes. अरे समझिए असला, do you understand now? उनको क्या बोलते हो आप, प्राइमरी लाइसोसोम्स, अंडरस्टूड। तो सेम वे यहाँ पे the Golgi apparatus which was present in this sperm has now modified itself and come to its head region where it is enclosed in a vesicle termed acrosome containing these hydrolytic enzymes. ठीक है, fine, okay. Oh, এই জায়গাରେ ଆଉ ଗୋଟେ important term ଟି ଅଛି ଯାହା ନା ଆମେ କହିଥାଉ कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन। अब वो क्या है रे बच्चा, यस, मेक इट क्विक, मेक इट क्विक, इतना स्लो नहीं चलेगा, आप लोगों को जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा। यस, कैपेसिटेशन क्या होता है, अच्छा देखो एडी, जितेबेले मु तुमको कहली जस्ट नाउ कि ये एक्रोसोम है, अब एक्रोसोम की ऊपर वाली सरफेस जो है उसके ऊपर एक लेयर होती है कवरिंग, दैट इज रेफर्ड टू एज द गैलिया, ठीक है, एंड लोअर में होती है मैंशेटिक, व्हाटएवर। तो ये गैलिया होती है, नहीं मोनालिसा, नॉट करेक्ट एक्चुअली, कैपेसिटेशन वो नहीं होता, क्या होता है देखो यहाँ पे, जस्ट लुक एट इट, आई विल टेल यू। तो व्हाट हैपेंस हियर, यही जगह रे एट दिस सेक्शन, यहाँ पे कवरिंग है इनकी, ये ठीक है। नाउ टिल दिस कवरिंग इज प्रॉपर इंटैक्ट, ठीक है, तो द फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन एज वेल एज ये जो आपकी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है इनको रिलीज करना मुश्किल है, ठीक है जी। तो व्हाट हैपेंस, द प्रोसेस बाय व्हिच the
outer covering over the acrosome's head becomes thin, पतला हो जाता है, such that the cell is exposed or the membrane is exposed. ठीक है? This is known as capacitation. Again, once this layer becomes thin and becomes exposed to the outside, तब ये ज्यादा active हो जाता है. Why? Because the chemoreceptors can easily, take up the chemical stimulus. Plus, the release of these hydrolytic enzymes will also become easy. This process is referred to as capacitation. ठीक है? हाँ, इसके होने से the fertilization mechanism is facilitated. माने सुविधा रहे ही पारी वो. ठीक है जी? But capacitation माने इटा. Once the capacitation is done, उसके बाद दूसरी चीजें इजी वे में हो सकती है. बुझ पा लो? ओके, ठीक है. तो ये चीज आपको समझ में आ गई. फर्टिलाइजेशन पार्ट डन. पर देखो, a sperm contacts with the zona pellucida. ठीक है. It induces changes in the membrane. Now, as soon as the sperm comes in contact, इसके साथ ना ही zona pellucida संगरे. कोटा zona pellucida रे नाली region. This red region here which you see is the zona pellucida section. ठीक है? So as soon as your sperm comes in contact with the zona pellucida, so it will make certain changes or induce certain changes. ठीक है? In the membrane. क्या changes करेगा? ध्यान दो. it देखो, ये जो cortical granule membrane इट लिखा है जी. Yes. तो ये cortical granule membranes will start to get deposited here. इस जगह पे ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे. এই জায়গারে এইটি এমটি ডিপোজিট হবা আরম্ভ হয়ে যাবে. ঠিক है? This will harden the structure. ঠিক ଅଛି? তো membrane টি जोटा की penetrable थिला एबे आउ penetrable रहिबनी. Why? Because सेही सेक्शन टी हार्ड हेई गला. ठीक है? जेहेतु हार्ड हेई गला आउ पेनिट्रेशन करिबाटा is not possible. এই জিনিসটি কাহি করা গলা. Because nature always favors a single healthy fertilization. Nature favors it. एमनी देखिया गले you would have seen twins and triplets etc. born also. है ना? एका सांगरे दुईटी छुआ जुड़वा होंगे. ठीक है? या फिर एक साथ में 3 बच्चे पैदा होंगे. ट्रिपलेट्स भी होते हैं. तो से केस रे दुईटी इंसो इधर आपकी मोनोजाइगोटिक हो सकते हैं या डाइजाइगोटिक हो सकते हैं. ठीक है? तो इन दैट सिनेरियो there can be more than one fertilization or from a single blastula division has occurred. Fine, whatever. So जिनसड़ा those are very unique cases and rare cases. Normally हुए नहीं. Why? Because nature हिसाब रे if inside a uterus a single healthy child is present, then it is always favorable. ठीक है? कहेंगी अरे नरिशमेंट प्रॉपर्ली मिलेगा. ठीक है? नरिशमेंट प्रॉपर्ली मिलेगा. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक से होगा. So it will be both beneficial for the mother also as well as the child also. So that is an ideal condition. Uterus ro size तमे देखिबो, it does not have enough space for accommodating more than one child. So more than one child वाले प्रॉब्लम टी कौन? एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एक कम होगा. यही सब जिनसे देखी बारी हो. प्रीमैच्योर डिलीवरीज हमारे चांसेस है. फाइन. तो ये सब चीजें होती है. तो सही जिनसे गुड़ी को अवॉइड करिया पाई multiple fertilizations have to be prevented. So a single ovum
can only fertilize a single sperm. ठीक है, इसमें और भी चीजें हैं जोटा कि तुम्हें टेक्निकली भाविब बुझी पारिबो कैसे। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान दो। स्पर्म रो प्लॉइडी केते हबो रे n, यस। सिमिलरली ओवम रो प्लॉइडी केते हबो रे, अगेन n. So when n and n will fuse together, the resultant zygote ploidy will be 2n. Yes. Male sperm T haploid structure. Female ovum is also haploid structure. दोनों फ्यूज होंगे तो क्या हो गया, 2n हो गया, डिप्लॉइड जाइगोट. ओके, एबे चिंता करो जदि मल्टीपल फर्टिलाइजेशंस का अलाउड रही जीवो, ओके, तो फिर जाइगोट रो प्लॉइडी कौन हबो, 3n 4n 5n whatever with जे तीटा फर्टिलाइजेशन हो दिए जो. So now you can understand parental ploidy केते थिला, diploid. Zygote रो केते हे गला, polyploidy रो कंडीशन पळे आसला. यदि polyploidy कंडीशन पळे आसला आउ सीए ए पर्टिकुलर ह्यूमन स्पीसीज को रिप्रेजेंट करिवो की नो. व्हाई? बिकॉज़ आमर डिप्लॉइड कंडीशन सेटा ट्रिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड पेंटाप्लॉइड कौन हबो, will that be a human? No. So that cannot exist or cannot happen. Hence, multiple fertilizations are prevented. ठीक है? Is that clear, people? शाबाश, very good. Okay, आगे देखो. The secretions of the acrosome help sperm to enter the egg cytoplasm via zona pellucida and plasma membrane. ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन टिकू आमे आउ कौन कहिताऊ, वाइटलाइन मेम्ब्रेन. ठीक है, ये जो चीज दिख रही है आपको, दिस इज योर वाइटलाइन मेम्ब्रेन. ठीक है भाई. ओ गुड. Okay, this causes second meiotic division of the secondary oocyte. Now, age insert is तमको in the starting part, first class when we were discussing the oogenesis. तो कौन कोई थी तमको? That oogenesis is a discontinuous process. ठीक अछि, जन्मर पूर्वरु, that is prenatal conditions रे आरंभ होइतिला. ठीक अछि, तापरे बर्थ परे अगेन प्यूबर्टी बेलकु आरंभ होला, कंटिन्यू, एंड फाइनली कंप्लीट केबे होला, ड्यूरिंग दिस पार्ट वेयर फर्टिलाइजेशन इज ऑकरिंग. ठीक अछि, तो द फाइनल meiotic division is completed where, in the fertilization part. तो जेतेबेले as soon as the sperm touches the zona pellucida, आउथरे कहूची भलो आरे सुनी था, sperm touches the zona pellucida, the ovum completes its final meiotic division. Ovum completes its final meiotic division, resulting in formation of the egg and the second polar body. तो फाइनली एज इंसर्ट हे गला हमर एग, काहे कि मियोसिस सरी गला, मियोसिस सरी गला. तो आफ्टर द मियोसिस इज कंप्लीटली फिनिश्ड, देन वी रेफर टू इट एज एग. ठीक है, एंड अ सेकंड पोलर बॉडी. ओके, नाउ this particular egg and the second polar body occur only when the sperm touches the zona pellucida. मन रखियो. फाइन. अच्छा, एटी सेकंड पोलर बॉडी रो कौन हेई थाए,
This question is many a times asked. Second polar body ro kon hobo, it is highly uncertain. माने केही कही पारिबे नहीं कि इसका एक्चुअल में होगा क्या. ठीक है. किंतु normally what we know or what we have observed that the second polar body is either destroyed, ठीक है, is either destroyed or phagocytosized. माने आमर जो मैक्रोफेजेस एटसेट्रा अछंती से माने फाइगोसाइटोसिस कर दियन तारो तो हजम हो जाता है. ठीक है. और the second polar body may also multiply, ठीक है, or fertilize even with other sperms. ठीक है. So that is also a possibility. ठीक. But generally कौन होता है? Destroyed हो जाए by degenerate हो जाता है. So remember that. Fine. उसके बाद देखो. The haploid nuclei of the sperm and ovum fuse together. See here, if you look at this context, तो यहाँ पे आपकी जो sperm की genetic material है, sperm की जो genetic material है, वो ये है, this one, ठीक है? The genetic material of the sperm is here, ठीक है? Now that part enters into the ooplasm. ये अंदर घुस जाता है इसके. ठीक है? As a result of which the male genetic material and the female genetic material now fuse together to form a diploid zygote. Bujela. The entire sperm does not enter into the egg. Remember this. In normal conditions, in normal fertilization, the sperm does not enter into the egg. Only the genetic material, that is the nucleus, will enter into the egg. And there it shall fertilize or fuse. Ujpallo. The sperm does not enter into the egg. Remember that. ठीक है? Fine. Now, look into this. ये basically is a stage by stage process of how fertilization occurs and what changes occur in the structure once fertilization is carried out. तो एक बार structure को observe करो, then you will discuss. Just 2 minutes, observe. Okay. Now, ध्यान से देखिए क्या हो क्या रहा है. Here, the fertilization has happened. And we have already observed the formation of a zygote, जो कि आपका एक diploid structure है. Male sperm, female ovum, both are haploid structures. Now, since they have fused together, तो ये एक diploid structure हो गया. ठीक है? Now,
this particular zygote is a single cell or unicellular. It will start undergoing division. कौन से प्रकार की डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन. ठीक है. अच्छा, in case of divisions, अगर आप ध्यान दोगे तो basically look at this carefully. The divisions, how do they occur? यहाँ पे divisions आपकी किस mechanism से होती है? Here the division is 2 to the power n. 2 to the power n divisions. ठीक है. माने if n is equal to 1, then आपको क्या मिलेंगे? 2 सेल्स मिलेंगे. if n equal to 2, तो आपको कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे. if n equal to 3, तो आपको कितने मिलेंगे ना? 8 मिलेंगे. तो in this way goes. ठीक है. तो पहली स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में आपका जो डिवीजन हुआ, द फर्स्ट स्टेज डिवीजन हल्ला मौजूद एम्प्टी दीफाड़ होएगा. ठीक है. तो ये आपका एक सेल हो गया, ये और एक सेल हो गया. तो फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट्स इन 2 सेल स्टेट. ठीक है. 2 to the power 1 is 2. ठीक है. दूसरा डिवीजन हुआ, अब देखो बच्चा, 4, 1 2 3 4. ठीक है. फाइन. सो सेकेंड डिवीजन हल्ला. अब उसके बाद नेक्स्ट they start further dividing. तो थर्ड डिवीजन हो गया. दिस इज द थर्ड डिवीजन. तो थर्ड के बाद आपको कितने मिल गए? 8. थर्ड के बाद कितने मिल गए? 8. ठीक है ना. उसके बाद आया फोर्थ. सो 2 to the power 4 is 16. तो 16 सेल स्टेज आ गया. ठीक है. एंड देन यू विल हैव द रेस्ट. पहले अभी 16 सेल स्टेज तक पहुंचो. तो फर्स्ट 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, ऐसा करके जाएगा. ठीक है. नाउ लुक एट इट. दिस मैकेनिज्म जहां पे जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिविजन्स, ठीक है, इज रेफर्ड टू एज क्लीवेज. इसे हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं. ठीक है. फाइन. नाउ ये क्लीवेज कब शुरू होती है? As soon as the fertilization is carried out and the zygote moves from the ampullary isthmus junction, towards the uterus. ठीक है जी. एम्पुलर इस्मस जंक्शन से निकल के यूट्रस की तरफ मूव करना शुरू किया. जैसे यूट्रस की तरफ मूव करना शुरू करेगा, ये क्लीवेज फिनोमिना शुरू हो जाएंगे. ठीक है. एंड फॉर्म्स 2 4 8 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स. नाउ ईच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, यहां पे जो आप देख रहे हैं, ये जो अंडे जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, these are basically referred to as blastomeres. इनके अलग अलग नाम है, which we'll discuss after this. ठीक है. The embryo with 8 to 16 blastomeres is called a morula. Embryo with 8 to 16 blastomeres is called a morula. ठीक है. Morula continues to divide and transform into what? A blastocyst. ठीक है. फाइन. बुझेला. तो इसके बाद you can see this is the actual image of how the blastomere are there and the blastula etc look like. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप तो इस प्रकार का ये दिखेगा. बुझ पा लो. ठीक है. तो वंस मोर एक बार देख लो. 2 4 8 16 डॉटर सेल्स वाली स्टेज है. इंपॉर्टेंट टर्म टा होची एटा मोरुला. 16 सेल स्टेज में उसको आप क्या बोलते हैं? मोरुला. मोरुला रॉ मोर वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है. क्यों? ब्लास्टोसिस्ट रो गोटे नेक्स्ट ट्रांजिशन आरंभ होगा, which you will see here. From blastocyst you will have another transition.
नेक्स्ट ट्रांजिशन विल बी देयर, ठीक है, मिनट, गुड 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 गुड। डिवाइड होने में कितना दिन लगता है? नसरीन, ऑसम क्वेश्चन, आई विल कम टू द आंसर, वेट अ मिनट। हाँ, ओके, ठीक है, फाइन। देखो यहां से हमारा एक नया नो मेथडोलॉजी शुरू होगा, अ न्यू प्रोसेस विल बिगिन, ठीक है, फाइन। तो हम एक काम करते हैं, ये सेकेंड वाली पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है, and we'll meet at 9:15 and continue from here where we have left, ठीक है। आप लोग भी जाके freshen up हो जाओ and then we'll meet at 9:15 and तब आपकी queries के सारे answers मैं दूंगा and we'll continue, ठीक है। चलो जल्दी जाओ and come fast।